Welcome back, guys. अब हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी क्वेश्चन 4 पेपर 2 5054. Let's start. Question 4. Figure 5.1 shows a microwave oven used to heat soup. The container for the soup is a glass bowl. Microwaves created inside the oven are reflected by the metal walls. Explain why the choice of material for the container is important in microwave cooking. Microwave cooking में अच्छा अगर अगर हम फॉर एग्जांपल स्टील का बॉल यूज करते हैं दैट विल make the steel absorb the energy जो heat energy है and microwaves will sorry absorbed by the steel and the steel bowl will be extremely hot for you to like hold. So that is impractical. And another reason is कि the choice of container is important because microwaves na certain what do you call it चीजों से pass through कर जाती है like glass and they will pass through the glass and heat the soup while जो metals होते हैं they reflect कर देते हैं while they are reflected by metal materials ठीक है ना. Using a glass metal container allows the microwave to penetrate and heat the soup effectively, whereas metal would reflect या हाँ metal reflect कर देता है चीजें and it will come between the cooking process. So this is the crappy answer we got in the mark scheme. Anyways, let's move on. The soup is mostly water. Microwaves are completely absorbed by a few centimeters of water. अब ठीक है ना. माइक्रोवेव जो थी ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बाउल और इसके अंदर सूप है ठीक है ना, इसके अंदर सूप है इतना. आफ्टर अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर द माइक्रोवेव्स आर completely absorbed. So सिर्फ few centimeter of water deep गया है the microwaves. As a result, microwaves do not reach the center of the soup. Center ठंडा रह गया. आपने कभी कभार अपना कोई खाने की चीज गर्म करने के लिए रखी होगी माइक्रोवेव में and when you take it out the outer side is very hot while on the other side जो inner side होती है that is inner center जो होता है that is very cold, not very like a bit, still a bit cold, right? That is because the microwaves have not penetrated enough yet. ठीक है ना. The instruction suggests that the microwave oven is turned off, the soup is not stirred, is left for some minutes so that the center becomes hot. State the name and describe two processes by which thermal energy transfers to the soup after the microwave is turned off. अच्छा, the first process will be conduction. Conduction में जो होता है ना the thermal energy transfers through material from higher region of temperature to lower region of temperature due to the collision of like transfer of kinetic energy. और जब kinetic energy transfer होती है it transfers onto the neighboring particles और जब neighboring particles में से होगा तो eventually it will reach a uniform state. In case of soup after the microwave is turned off, the outer layer of the soup will be hotter than the inner surface. Outer layer जो है that will be hotter than the inner surface. That is obvious. So yeah. So जो microwaves होंगी ना mostly be absorbed by the water near the surface. ठीक है ना. As a result, heat from the outer surface है ना, outer surface से heat it will seep inside the center. ठीक है ना. अच्छा अब दूसरा प्रोसेस अगर हम देखें तो दैट वुड बी कन्वेक्शन. कन्वेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हायर रीजन जो होता है ना, हायर फॉर एग्जांपल दिस इज वाटर राइट. वाटर जो डेंसर रीजन होता है वाटर का दैट इज द कोल्ड वाटर. जो कोल्ड वाटर होता है दैट इज डेंस देन द हॉट वाटर राइट. हॉट वाटर लेस डेंस होता है, कोल्ड वाटर मोर डेंस होता है. सो दैट रिजल्ट्स इन अ कन्वेक्शनल करंट. जब कोल्ड वाटर इधर होगा राइट, कोल्ड वाटर इधर है और हॉट वाटर बाहर है ठीक है ना. हॉट वाटर बाहर है. हॉट वाटर जो है दैट इज व्हाट डू यू कॉल इट. हॉट वाटर इज वो
लेस डेंस हॉट वाटर लेस डेंस है और कोल्ड वाटर लेस मोर डेंस है तो कोल्ड वाटर नीचे चला जाएगा इट विल सिंक एट द बॉटम एंड जो लेस डेंस वाटर है ना which is the hot water that will go above ठीक है ना that will go above or in context of soup after the microwave is turned off the outer layer of soup being hotter than the center will cause the soup to have a non-uniform distribution इसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी मतलब कुछ कुछ ठंडा होगा कुछ गर्म होगा एज अ रिजल्ट जो कन्वेक्शन और करंट्स है इन द सूप द हॉटर और जो हॉटर होगा जो और लेस डेंस होगा पोर्शन ऑफ द सूप नियर द surface will rise while the cooler or denser portion will sink right this creates a continuous circulation around the soup so the first will be conduction the second will be convection as I what do you call explained thoroughly तो 3 लाइन का आंसर है 3 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छा एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग आई होप यू एंजॉयड हैव अ ग्रेट डे